Good morning, everyone. I, Rupa Deb, Company Secretary, NHPC Limited, on behalf of NHPC Limited, extend a warm welcome to you all at the 49th Annual General Meeting of your company. This AGM is being held through video conferencing, VC, or other audiovisual means, OAVM, in line with relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India. I now have the honor of introducing you to our esteemed members of the board present for the meeting. Shri Rajendra Prasad Goyal, Chairman and Managing Director and Director Finance. Shri Uttam Lal, Director Personnel. Shri Sanjay Kumar Singh, Director Projects. Shri Suprakash Adhikari, Director Technical. Shri Muhammad Afzal, Joint Secretary, Ministry of Power and Government Nominee Director. Shri Prem Kumar Govarthanan, Independent Director and Chairperson of Committee of Directors on Corporate Social Responsibility and Sustainability and Nomination and Remuneration Committee. Dr. Uday Sekharam Nirgudkar, Independent Director and Chairperson of Audit Committee. Shri G.G. Joseph, Independent Director and Chairperson of Stakeholders Relationship Committee. Shri Anil Kumar Sood, Independent Director and Chairperson of Risk Management Committee, is also present through video conferencing. Representatives from statutory auditors who are present through VC or OAVM are Shri Dharam Raj and Shri Sandeep Agarwal from Messrs. Dharam Raj & Co. Shri Mukesh Bansal from Messrs. S.N. Dhawan & Co. LLP. Shri Ritesh Agarwal from Messrs. S. Jaikishan. Representative of Secretarial Auditor present through VC or OAVM is Shri Naresh Kumar Sinha of Messrs. Kumar Naresh Sinha and Associates. Shri Amit Kaushal of Messrs. A. Kaushal and Associates, Company Secretaries, New Delhi, Scrutinizer, is also present through VC or OAVM. The shareholders have been provided the facility to join this AGM through VC or OAVM on first-come, first-served basis. Members who are not able to join this meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM on the website of the company, that is www.nhpcindia.com. The members joining the meeting are by default put on mute by the host to avoid any background noise disturbance and to ensure smooth conduct of the AGM. The shareholders were given an option to register themselves as speaker so that they can express their views or ask questions. There shall be a separate question and answer session in which name of the registered speaker shareholder shall be announced. Speaker shareholder will thereafter be unmuted by the host. The speaker shareholder may express his or her views or ask questions related to businesses proposed in the AGM. Members are requested to be brief and limit their questions or views to 2 minutes and also mention their names before raising any query. During the meeting, if any of the shareholders face any connectivity problems, they may call a toll-free number of NSDL as given in notice of the AGM, which has already been circulated. In addition, the shareholders who are desirous to put their questions concurrently can use the chat box facility. Pursuant to the provisions of Companies Act 2013, read with relevant rules, SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirement Regulations 2015, that is LODR, and the relevant circulars, the company has provided facility of remote e-voting through NSDL to its members in respect of the businesses to be transacted at the AGM through NSDL. The facility of casting votes through e-voting system by members during the AGM is also provided by the company through NSDL. Those members who could not exercise their votes through remote e-voting during the AGM can avail the facility of e-voting during the AGM by following the instructions mentioned in notice of the AGM. The result of e-voting shall be declared within 2 working days from the conclusion of the AGM. The result declared along with consolidated scrutinizer's report shall also be available on the website of the company and on the website of NSDL. The results shall simultaneously be intimated to stock exchanges as well as displayed on the notice board of the company at its registered office.
Since the AGM is being held through VC or OAVM in accordance with the relevant circulars, there is no requirement of physical attendance by shareholders and the facility for appointment of proxies by the member is not available. The quorum as per requirement of the Companies Act 2013 is present. As per Article 26 of the Articles of Association of NHPC, the chairman of the board of directors is entitled to take the chair at any general meeting. Hence, I request our chairman and managing director, Shri Rajendra Prasad Goyal, to start the proceedings of the meeting. Over to you, sir. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the board of directors, it gives me great pleasure to welcome you all to the 49th annual general meeting of your company. Meetings through video conferencing allows us to maintain the personal connection of a traditional meeting while leveraging the benefits of modern technology to reach a wider audience. With this measure, and as permitted by MCA and SEBI to conduct AGMs through VG or OBAM, we are able to welcome a greater number of our shareholders from different cities and even countries. The company has taken all feasible steps to ensure that maximum number of shareholders participate in the AGM through video conferencing and vote thereat. The board of your company has appointed Sri Amit Kosal of Messrs. A. Kosal and Associates, company secretaries, as scrutinizer to scrutinize e-voting process in fair and transparent manner. The company secretary has informed that the requisite quorum for the meeting is present through VC. Therefore, I call the meeting in order. As per the provisions of the Companies Act 2013, the registers are documents that are required to be available for inspection by the members are available for inspection electronically. The process of voting has already been explained by the company secretary. I request members to permit me to take the notice convening this meeting and director's report having already been circulated to you as read. The chairman's statement has already formed part of the annual report. However, I would like to provide some highlights of the same. The year 2024-25 has marked an important chapter in NHPC's journey, characterized by a series of remarkable milestones. Among these, I am delighted to inform that NHPC has been honored with the prestigious Navratna status. With this, we are better positioned to pursue technical joint ventures and strategic alliances that will drive our future success. This achievement is a testament to the dedication and hard work of the entire NHPC team, as well as the trust and support of our stakeholders. Moving ahead, NHPC marked a momentous milestone, 50th raising day, the start of Golden Jubilee year, which reflects your company's rich history, remarkable achievements, and steadfast commitment in India's energy landscape. NHPC has received the prestigious Great Place to Work certification from Great Place to Work India, recognizing our commitment to fostering a workplace culture rooted in trust, respect, dignity, inclusivity, and employee recognition. Performance highlights are as under the completion of Aarti-2 HE project with longest headrest tunnel in most challenging condition is testimony of NHPC's commitment towards accomplishment of its projects. This marks a major step towards securing India's energy future by adding hydro capacity addition of 800 megawatt in RE portfolio of our country, and reaffirms NHPC leadership in the hydropower sector. Recently, NHPC has also commissioned 214.28 megawatt of the 300 megawatt Karnisar solar power plant in Bikaner, Rajasthan.
an important step in our ongoing efforts to diversify into other renewable energy sources. We have made strong progress in Subansiri Lower HE project with the completion of civil works of the water conductor system in April 2025. Clearance from National Dam Safety Authority is awaited for commercial operation of 3 units of 250 MW each of 2000 MW Subansiri Lower HE project. Here, I would like you all to join me for a 3D walkthrough of the 2000 MW Subansiri hydroelectric project. As we celebrate the evolutionary journey of our nation's development, NHPC Limited is also contributing with its mega structures of power development. One such mega hydropower project being undertaken by NHPC Limited is Subansiri Lower Hydroelectric Project. The largest hydroelectric project so far in India, having installed capacity of 2000 megawatt and annual generation of 7421.59 MU. The project is a run-of-the-river scheme on Subansiri River, a tributary of Brahmaputra. The right bank of the project is situated in Arunachal Pradesh and left bank is in Assam. The major components of the project are a concrete gravity dam for storing water in the reservoir, 8 intakes to draw water from the reservoir, 8 head race tunnels for conveying water from the reservoir to the powerhouse, a surface powerhouse for housing the machineries to generate electricity. A 116-meter high and 284-meter long concrete gravity dam is constructed across the river to head up the water. 9 radial spillway gates, the biggest radial gates in the country, have been provided in the dam for safe discharge of the probable maximum flood of 37,500 cubic. A plunge pool has been provided to dissipate the energy of water released from the spillway with ski jump arrangement. Cut-off wall have been provided at the upstream and downstream of the dam to check seepage. The surface powerhouse of Subansiri Lower project is located on the right bank of river Subansiri. The powerhouse is designed to house 8 250 megawatt machines, transformer bay, GIS block and pothead yard. The auxiliary building, transformer bay, GIS and pothead yard are located downstream of the main machine hall. To isolate the machine from the water conductor system, MIB has been provided in the upstream just adjacent to the machine hall. Total 8 intake structures have been provided to draw water from the reservoir. Water is then conveyed through 8 9.5 meter diameter horseshoe-shaped head race tunnel to the powerhouse. Before entering the turbine, water is conveyed through independent vertical pressure shaft, where high head is generated to rotate 8 250 generator. 8 surge tunnels have been provided to protect the water conductor system from the water hammering effect. Along the penstock, a butterfly-type main inlet valve is installed to regulate the water inflow into the turbine during generation. When the main inlet valve opens, water starts to flow through spiral case, stay vanes, guide vanes and the Francis turbine runner, the heaviest turbine runner of the country, weighing 105 ton. The runner is coupled to the turbine shaft. Due to the water flow, the runner rotates, thus rotating the turbine shaft. Water after passing through the runner is channelized through the draft tube and TRC to exit into the tail pool. Rotating turbine shaft is coupled to the shaft of the generator rotor, the biggest rotor ever handled in a hydropower plant weighing 620 ton. This generator rotor creates a rotating magnetic field, which in turn helps in generating electricity through generator's stator windings. The generator transformers step up the generating voltage from 16 kV to 400 kV. GIS is used as switching system to connect the generating units with pothead yard and 400 kV transmission lines. Power generated from the project is evacuated through 6 400 kV and 2 132 kV transmission lines.
400 kV transmission lines are connected to the nearest PGCIL pooling station at Biswanath Chariali through 400 kV double circuit transmission lines. After electricity is generated, water flows to the river through the tail race channel. Out of the 8 turbines, one of the turbines shall always be in operation, which will ensure that a continuous river flow is always maintained throughout the year for ecological balance. The project would provide a great relief from the flood devastation being faced by the region every year since time immemorial by controlling the flood through regulated discharge of water in river. The project will allocate a part of its total generation as free power to Assam and Arunachal Pradesh. All 7 northeastern states and 5 western states will be benefited from the power generated from the project. Riverbank protection and erosion control measures have been implemented to cover the stretch up to 30 km downstream of the dam. Sustainable livelihood interventions have been implemented in Dhemaji and Lakhimpur districts of Assam, identifying the initial sectors as sericulture, piggery and handloom. A total of 470 crores have been allocated for these downstream developmental works. Various CSR programs and schemes have been implemented for welfare of the local populace of Assam and Arunachal Pradesh. This project has brought prosperity for local people as well as the region, boosting local economy and general improvement in living standard of the masses, providing employment to the local youths. About 90% of 7,000 people engaged in construction works are local. Back to the performance highlights at Tista 6 HE project. The headrest tunnel phase 1B and phase 2B saw successful breakthrough in April 2025. The NHPC has signed various MOUs with state governments, state PSCs and CPSCs regarding development of pumped storage and RE projects, hydro, green, hydrogen, etc. Epigenco, NHPC Green Energy Limited, Angel, a joint venture company of NHPC Limited and Andhra Pradesh Power Generation Corporation Limited, was incorporated with equal equity participation for implementation of pumped storage hydropower projects and renewable energy projects in Andhra Pradesh. Operating performance overview is as follows. NHPC is committed to progress towards strategic goals with a focus on sustainable growth in alignment with both the Government of India's vision and the rapid advancements in the power sector. This year, our total cumulative generation across all power stations reached 19,878 million units with an overall annual plant availability factor of 73.94% for financial year 2024-25. 7 power stations achieved their respective annual design energy, while 14 power stations achieved their respective normative PAF. Financial performance overview as follows. Despite facing numerous challenges, NHPC delivered strong financial performance, achieving a profit after tax of Rs 3,083.98 crore on a standalone basis. Total income for financial year 2024-25 was Rs 10,573.41 crore. Revenue from operations amounted to Rs 8,994.26 crore. I am pleased to announce that the Board of Directors has recommended a final dividend of Rs 0.51 per equity share, totaling Rs 512.30 crore for financial year 2024-25, and interim dividend of Rs 1.40 per equity share, amounting to Rs 1,406.30 crore, was paid in March 2025. Subject to approval at the 49th Annual General Meeting, the total dividend for financial year 2024-25 will amount to Rs 1.91 per equity share, totaling Rs
1918.60 crore. Corporate social responsibility and sustainability activities are as under. Your company's unwavering commitment to corporate social responsibility and sustainability principles are not merely aspirational but are deeply embedded in its operations, culture, and strategic vision. NHPC conducted its affairs in a socially responsible manner, adhering to high standards of integrity and ethical behavior. Our CSR and sustainability policy complies with Section 135 of the Companies Act 2013 and the company's Corporate Social Responsibility Policy Rules 2014 addressing social, economic, and environmental issues. Your company is committed to making significant contributions to the community, environment, and society through well planned CSR interventions. Over time, the reach of your company's CSR initiative has expanded manifold, covering the intended areas effectively. In financial year 2024-25, NHPC spent rupees 109.64 crore on CSR and SD activities, reflecting our commitment to enhancing community welfare through sustainable development projects. Based on CSA analysis on Dow Jones Sustainability World Index, NHPC has achieved S&P Global ESG score of 61 in March 2025. Enhanced ESG scores of NHPC signify a more robust commitment to environmental stewardship, social responsibility, and effective governance practices. NHPC is dedicated to the highest standards of corporate governance, ensuring ethical conduct and sustainable value creation for all stakeholders. With great pride, I reaffirm our unwavering commitment to the principle of corporate governance. In an era where transparency, accountability, and ethical conduct are paramount, your company stands resolute in upholding these values, ensuring sustainable growth and fostering trust among all our stakeholders. As a listed central public sector enterprise, your company complies with applicable provisions of the Companies Act 2013, SEBI regulations, and DP guidelines on corporate governance. In financial year 2024-25, your company's compliance with DP guidelines on corporate governance has been rated as excellent by DP's corporate governance grading system. I state with profound gratitude and humility that your company has received recognition, awards, accolades for excellence, which are not merely symbols of achievement but are reflections of the trust, partnership, and shared vision we have cultivated with each of you. Some of the awards received during 2024-25 includes Salal Power Station receiving the first prize for excellence in implementing official language policies from the Department of Official Languages, Ministry of Home Affairs at Jaipur. NHPC's Tarak Power Station, Uttarakhand, being honored with the prestigious CBIP Award 2024 for Best Performing Hydropower Project. Token of acknowledgement and appreciation for exemplary CSR practices in challenging terrains of Northeast India during the 6th Conference on Empowering Persons with Disabilities through Accessible and Assistive Technology organized by ASSOCHAM. The Economic Times HR World Future Ready Organization Award 2024. CII HR Excellence Award for 2024-25 during the 15th CII National HR Excellence Award Conference 2024-25.
ET HR World Future Skills Gold Award 2024 for Diversity and Inclusion Learning Initiatives. We deeply appreciate your unwavering support, investment, and belief in our work. These are fundamental to our ability to generate clean, renewable energy and contribute positively to the communities we serve. Your faith in our management has been instrumental in navigating challenges and seizing opportunities, leading to increased efficiency, business expansion, and capacity addition plans. These endeavors let us stay focused and committed to our vision of nation building and sustainable growth. I wish to place on record sincere appreciation to all the employees for their dedication and commitment. Their hard work and unstinted efforts enabled the company to sustain its excellent performance and consolidate its sectoral leadership. The commitment displayed by the employees at all levels is exemplary and praiseworthy. NHPC is proud of continuous untiring efforts of its employees, especially posted at power stations and projects of the company. I extend my sincere gratitude for the guidance and cooperation received from Government of India, particularly Ministry of Power, Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Finance, Department of Public Enterprises, Office of the Comptroller and Auditor General of India, Central Electricity Authority, Central Electricity Regulatory Commission, Central Water Commission, and other concerned government departments or agencies at the central and state level. I am also thankful to all stakeholders, valued customers, contractors, vendors, and consultants for their continued support and confidence reposed in the company. I also express my sincere appreciation to the esteemed members of the Board of Directors for their valuable inputs in steering NHPC towards continued success. I further acknowledge invaluable guidance and inputs received from statutory auditors, secretarial auditors, and co-auditors of the company and express sincere thanks to the national and international financial institutions and banks, multilateral financial institutions, domestic and international credit rating agencies for their valuable support and continued trust in the company. As we continue to reach new milestones, I assure that the strategic directions and initiatives undertaken by your company shall result in value creation and sustainable returns for all stakeholders. There are no qualifications or observations by the joint statutory auditors on the financial statements of the company. It is to inform that C&AG wide letter dated 13th August 2025 had revised their comments as was given by them in letter dated 4th August 2025. The revised comments inter alia provides that on the basis of supplementary audit, nothing significant has come to the knowledge of C&AG which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Companies Act 2013 on the standalone and consolidated financial statements of NHPC Limited for the year ended 31st March 2025. I now request the Company Secretary to read out the items of business proposed in the notice of the meeting and also to read the qualifications or observations in the Secretarial Auditor's report and the explanations or comments given by the board in this regard. Now I hand over to Company Secretary. Thank you, sir. There are a total of 13 businesses, 5 ordinary and 8 special businesses.
Item number 1 is ordinary resolution to receive, consider and adopt the audited standalone and consolidated financial statements of the company for the financial year ended March 31, 2025, together with the report of the Board of Directors, auditor's report thereon, and comments of the Comptroller and Auditor General of India. Item number 2 is ordinary resolution to confirm the payment of interim dividend and declare final dividend for the financial year 2024-25. Item number 3 is ordinary resolution to appoint a director in place of Shri Muhammad Afzal, Joint Secretary, Hydro, Ministry of Power, Government Nominee Director, DIN 09762315, who retires by rotation and being eligible offers himself for reappointment at the pleasure of the nominating authority. Item number 4 is ordinary resolution to appoint a director in place of Shri Uttam Lal, Director Personnel, DIN 101-94925, who retires by rotation and being eligible offers himself for reappointment for remaining term at the pleasure of the President of India. Item number 5, ordinary resolution to authorize Board of Directors of the company to fix the remuneration of the joint statutory auditors for the financial year 2025-26. Item number 6 is ordinary resolution to ratify the remuneration of the cost auditors for the financial year 2025-26. Item number 7 is ordinary resolution to appoint Messrs. Akhil Rohatagi and Company Secretaries as Secretarial Auditor of the company. Item number 8, ordinary resolution to appoint Shri Suprakash Adhikari, DIN 107274 as Director Technical of the company. Item number 9 is special resolution to reappoint Dr. Uday Sakharam Nirgudkar, DIN 07592413 as an independent director of the company. Item number 10, special resolution to reappoint Shri G.G. Joseph, DIN 09415941 as an independent director of the company. Item number 11, special resolution to appoint Shri Anil Kumar Sood, DIN 01376251 as an independent director of the company. Item number 12, special resolution to increase borrowing limit of the company from rupees 50,000 crore to rupees 60,000 crore. Item number 13 is special resolution to create mortgage and or charge over the movable and immovable properties of the company. These were the items of businesses. Now the qualification and or observations in the secretarial audit report and management reply thereof are as under. Observation by secretarial auditor, qualification or observation. 1. The company did not have requisite number of independent directors IDs from 8/11/2024 to 31/3/2025, including woman ID from 10/11/2024 to 31/3/2025 on its board as per regulation 17(1) of SEBI LODR after completion of the tenure of 4 IDs in November 2024. The company did not have requisite number of IDs and woman director from 10/11/2024 to 31/3/2025 on its board as per section 149 of the Companies Act. Point number 2, the composition of audit Nomination and Remuneration Committee was not as per Regulation 18 Subregulation 1 and 19 Subregulation 1 of SEBI LODR and Sections 177 and 178 of the Companies Act 2013 from 10/11/2024 till 31/3/2025 due to non-appointment of requisite number of IDs on the board of the company by Government of India. After completion of tenure of 4 IDs in November 2024. Thereafter, the committees were reconstituted by the board with the remaining directors for substantial compliance of law. Point number 3, the company has not complied with certain paras viz 3.1.4 from 8/11/2024 to 31/3/2025, 3.1.2, 4.1.1, 4.4 and 5.1 from 10/11/2024 to 31/3/2025 of DP guidelines on corporate governance regarding composition of board and committee thereof. The reply to all the 3 are same as under.
as per Article 34 of Articles of Association of the company, read with Ministry of Corporate Affairs notification dated June 5, 2015, the directors, including independent directors, IDs, on the board of company are appointed by the President of India through administrative ministry, that is Ministry of Power. The matter regarding appointment of requisite number of IDs, including woman ID, had regularly been pursued with the administrative ministry, that is Ministry of Power, Government of India. The board had reconstituted Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee with available directors with effect from November 10, 2024 for substantial compliance of law. Subsequently, Ministry of Power, by letters dated April 17, 2025, had appointed or reappointed 3 independent directors on the board of the company. After aforesaid appointment/reappointment, the board of directors has reconstituted the Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee with effect from April 17, 2025, which are now in compliance with the statutory provisions. Now, I request Chairman and Managing Director, sir, to take the proceedings further. Over to you, sir. I now call upon the shareholders who have registered themselves as speaker in this AGM one by one to ask questions and to seek clarifications on the items of business as mentioned in the notice. Thank you. Now, we will go ahead and begin the question and answer session. Members are requested to keep their questions brief and specific. We request you to please unmute your audio, turn on your video, and proceed with your question. Now, I invite our first speaker shareholder, Ms. Bharti Saraf, to kindly accept the prompt on the screen, turn on your audio and video, and proceed with your question, ma'am. Ms. Bharti, request you to unmute yourself and proceed with your question. अब मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, please. हाँ जी, एक मिनट। माननीय सभापति जी, उपस्थित निर्देशक मंडल के सदस्यगण, अधिकारी और कर्मचारीगण, मैं संतोष कुमार सराफ, भारतीय साहब में ज्वाइंट होल्डर, आप सभी को कलता से नमस्कार करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे स्वास्थ्य में होंगे सर। सर, मैं उन सभी कर्मचारी भाई बहनों का भी आभार प्रकट करता हूँ जिनकी कड़ी मेहनत का फल है कि आज हमारी कंपनी इतना अच्छा रिजल्ट और इतना अच्छा डिविडेंड प्रदान कर रही है सर। उन कर्मचारी के साथ साथ में मैं उनकी फैमिली का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा जो सदा बैकबोन के रूप में उनके साथ में खड़ी रहती है, जिसे पूर्ण स्वस्थ तरह के और पूर्ण क्षमता से वो हमारी कंपनी में योगदान दे रहे हैं सर। चेयरमैन साहब, आपने अपने वक्तव्य में बहुत कुछ बता दिया और आपकी बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रश्न इसलिए नहीं करता। मुझे फिजिकल कॉपी की रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने अभी तक नहीं भेजी। आप देख रहे एज है और लैपटॉप में जाके पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं होता है, तो मैं सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा एक फिजिकल कॉपी जरूर भिजवा दें और फिर अगले साल जब रिक्वेस्ट करें पहले ही भिजवा दें, जिससे चेयरमैन साहब से एक आध तो प्रश्न कर सके। चेयरमैन साहब, आपने काफ़ी कुछ बताया और मैं कंपनी का आईटी से शेयर होल्डर हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। सिर्फ मेरा यह है कि मैं एक दो चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी जो टर्म इफेक्ट हमारी कंपनी में कितना आएगा? जो टर्म ने टैरिफ आदि लगाए हैं, इसका इफेक्ट हमारी कंपनी में क्या पड़ सकता है? इसके प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या कदम उठा रहे हैं, ये बताइएगा सर। और सर, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमारा क्या विचार और कितना भी कैपेसिटी है अगर बजट में, तो आगे क्या विचार है, इसके बारे में ज़रूर बताने चेष्टा करिएगा सर। ज़्यादा प्रश्न मैं नहीं कर सकता कि बैलेंस शीट इतनी अच्छा आपने दी है कि उसके लिए मैं सीईओ का आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी टीम जो बैलेंस शीट दी उसमें हमारे लिए प्रश्न है ही नहीं। अतः मैं एक दो प्रश्न आपसे पूछता हूँ और वहाँ से प्रार्थना करूँ अगले साल भी इससे अच्छे बैलेंस शीट बना दे, बहुत अच्छा है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा प्रदान करें और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा टीम में दें सर। सर, मैं आने वाले फाइनेंस ईयर की आप सभी को शुभकामना देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ फाइनेंस ईयर 25-26 आप सभी डायरेक्टर के साथ साथ जितने भी कर्मचारी भाई बहन हैं उनके लिए हेल्दी वेल्दी और प्रोसेस सेफ्टी के साथ व्यतीत होगा सर। सर, आने वाले त्योहारों की भी शुभकामना देता हूँ, चाहे वो राष्ट्र त्यौहार हो चाहे आपके फैमिली के त्यौहार हो। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना ये त्यौहार आपकी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ और आनंद लेके आए सर। सर, मैं मॉडरेटर का भी आभार प्रकट करता हूँ। इस रिक्वेस्ट के साथ मैं करता हूँ सर, अगले साल बीसी मीटिंग ही रखिएगा
जिससे आपके और हमारे जितने भी कर्मचारी भाई जो काम कर रहे हैं उनके प्रति अच्छे काम के प्रति हम आभार प्रकट करने का मौका मिलेगा। प्रश्न तो एक दो और कई बनते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में जितने दिए हैं तो मुझे बैलेंस शीट मुझ पर मिल जाएंगे। अगर हार्ड कॉपी आप भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। जय जय भारत, राम राम। हाँ, धन्यवाद सराफ साहब। जहाँ फिजिकल कॉपी की आपने बात की है तो हमने डिस्पैच कर दी होगी, नहीं तो हमने नोट कर लिया है, आपको फिजिकल कॉपी मिल जाएगी। और बाकी जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका भी हम आपको ईमेल से रिप्लाई करेंगे। और आपने जो कंपनी के लिए शुभकामनाएं दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Now I invite our next speaker shareholder, Mr. Manoj Kumar Gupta, to kindly accept the prompt on the screen, turn on your video and audio, and proceed with your question, sir. Mr. Manoj, requested to unmute yourself and proceed with the question. Good morning, respected Chairman, Board of Directors, fellow shareholders. My name is Manoj Kumar. I have been sitting I'm from sorry to interrupt you. Mr. Manoj, I'm sorry to interrupt you. Kindly switch off your webcam and speak so you are audible Yeah, to us. respected Chairman, Board of Directors, fellow shareholders. My name is Manoj Kumar Gupta. I've joined this meeting from my residence city of Joy, Kolkata. I feel proud to be a shareholder of NHPC since IPO, and I believe that company will go further to return to the employees and the investors. And sir, I've gone through your speech, and I feel proud to see your speech. And I thanks to you and your team for excellent result of the company for the year 24-25. And I thanks to the company secretary and the team to help us to join this meeting through VC sir. Keep continue the VC meeting because it's our Prime Minister ambition, who is a visionary Prime Minister, Sri Narendra Modi, to inspire the digitalization. सर ये डिजिटलाइजेशन का एक कारनामा है कि 6 साल से हम वीसी मीटिंग से आपसे जुड़ पाते हैं। आप फरीदाबाद में, हम लोग कलकत्ता में हैं, बट एक बात हो जाती है आपसे, आपकी बात भी सुनते हैं, हम अपनी बात भी कहते हैं। सर व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? सर जो बैलेंस शीट है ना, उसके हिसाब से आपका शेयर प्राइस बहुत लो है कंपेयर टू जो परफॉर्मेंस है, जो प्रॉफिट है, जो टर्नओवर है, जो पे आउट है, उसके हिसाब से हमारा शेयर प्राइस 500 रुपया से ऊपर होना चाहिए। व्हेन दैट रिफ्लेक्शन विल कम इन द स्टॉक मार्केट। सर आप बिजली बनाते हैं तो शेयर मार्केट में भी करंट आना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर को भी रिटर्न मिले, क्योंकि एनएचपीसी जो है ना हाइड्रो पावर बनाती है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट पे आना चाहिए। क्योंकि और सब बिग इन्वेस्टर नहीं आ रहे 3 साल से आपके इन्वेस्टमेंट में। सो काइंडली कॉल सम प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइम टू टाइम एंड इन्फॉर्म द मीडिया अबाउट द वर्किंग ऑफ द कंपनी, so that big institution can invest their money in the company, so that a flow will come and the price will go up. एंड सर ईएसजी स्कोर क्या है थोड़ा बताइए, जिससे अगर हमारा ईएसजी स्कोर अच्छा है तो उसके विषय में आपका क्या प्लान है। और सर जो ग्रीन एनर्जी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है टू सेव द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो इस विषय में आपका क्या विजन है कि फ्यूचर में आप ग्रीन एनर्जी में भी जाएंगे क्या, कोई सब्सिडी या कुछ डिमर्ज करके जैसे एनटीपीसी ने किया है, वैसा आपका कोई प्लान है? क्योंकि हाउ यू विल यूटिलाइज द फंड cash which you have on 31st March 2025 in your books? आपके पास पैसा है सर, तो उसका यूटिलाइज कीजिए जिससे कि एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर को रिटर्न मिले। और सर एक्सपेंसेस कुछ है ज्यादा बढ़े हैं, उसको राइट टू टेक ए पॉजिटिव स्टेप टू रिड्यूस। और सर जो सीएसआर है ना, उसमें सर जो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में जो मेडलिस्ट हैं उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए क्रिकेट में फिल्म में पैसा बहुत है। कंपनी क्रिकेटर को और फिल्म स्टार को ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, उनके पास पैसा बहुत है। एक एक फिल्म स्टार जो ना 10-10 करोड़ रुपया लेता है, तो पैरा ओलंपियन या ओलंपियन जो है ना, वो 50 लाख 1 करोड़ में आपका ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। उनको एक सपोर्ट मिलेगा अगर आप उनको बनाएंगे। आप हरियाणा में हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस है, हरियाणा और राजस्थान में बहुत से युवा खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर जीते हैं, जिनको कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी अप्रिशिएट किया है और उनको काफी इंस्पायर किया है। तो इस विषय में आप सोचिए कि हम सीएसआर में कुछ करें। और सीएसआर में सर हेल्थ और एजुकेशन में फोकस कीजिए, क्योंकि देश में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में काफी काम करना है। और Sir, I strongly support resolution number 11, 12, 13. These are the enabling resolution
which gives the power to the company to go further in future without consent, without further consent of the shareholder. So this is a good step to pass this enabling resolution in the AGM. So this will take and sir, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कैलकाटा आने का एक प्रोग्राम बनाइए जिससे हम लोग आपसे मिल सके। मैं भी फरीदाबाद आता रहता हूँ, बट आप ट्यूर में रहते हैं। जब मैं फोन करता हूँ आपके दफ्तर में कि सर जो है ना ट्यूर में है, तो नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो मिलेंगे सर। With this, I strongly support all the resolutions. Thanks to your company secretary and our team to help us to join this meeting through BC, sir. Thank you, sir. धन्यवाद गुप्ता जी, आपने जो कंपनी के लिए शुभकामनाएं दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो क्वेश्चन हैं उनमें कुछ का मैं आंसर करूंगा, बाकी आपको ईमेल पे मिल जाएंगे। ESG स्कोर की आपने बात की, तो ESG स्कोर हमने बताया कि ये 61 है अभी हमारा ESG स्कोर, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा भी आगे जैसे जैसे रिपोर्टिंग में बेटरमेंट होगा। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन बॉन्ड लाइए। हाँ ESG स्कोर हमारा 61 है अभी। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च कर दीजिए सर। जी जी बिल्कुल। आपको और ग्रीन पैसा मिल ग्रीन जाएगा। एनर्जी, जी ग्रीन एनर्जी फ्यूचर की आपने बात की, तो NHPC तो टोटली ग्रीन एनर्जी कंपनी है। हाइड्रो के जो लार्ज प्रोजेक्ट्स है वो भी ग्रीन एनर्जी में कवर है, और सोलर विंड तो है ही है। तो हम जो भी कर रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी कर रहे हैं। और जो फ्यूचर प्लान की बात आपने की है, तो अभी हमारे 8,500 मेगावाट की कैपेसिटी हाइड्रो और सोलर में अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसमें से 2880 मेगावाट का दिबांग छोड़ के बाकी सारे प्रोजेक्ट 2029 तक पूरे हो रहे हैं। और करीब 9,000 मेगावाट के हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रो के, वो पाइपलाइन में हैं। तो कंपनी का जो फ्यूचर प्लान बहुत रोबस्ट है, और कंपनी डेडिकेटेड है पूरे फ्यूचर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जहाँ एक्सपेंसेस इंक्रीज की बात है, तो एक्सपेंसेस जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री हमारी अगर इंक्रीज होता तो वो केवल टाइम गैप अरेंजमेंट होता है, तो एक्सपेंस को आपको इंक्रीज की कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। एक्सपेंस हमारे कंट्रोल में है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की आपने बात की, तो हम कैपेक्स मोड में है कंपनी, सरप्लस फंड नहीं रहता है। जो आपने मार्च में बैलेंस की बात की है वो अप्रैल मंथ में या मई मंथ में यूटिलाइज हो जाता है। हम तो बोरोइंग मूड में रहते हैं। इस साल भी हमारा रोबोस्ट बोरोइंग प्लान है, तो सरप्लस कैश कंपनी के पास में नहीं रहता है। हम पहले खर्चा करते हैं तभी बोरोइंग करते हैं। अगर कभी सरप्लस हुआ तो हम शेयर होल्डर के साथ में शेयर करने के लिए हमेशा हाजिर हैं। जहां आपने CSR में जो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक को इंक्लूड करने की बात की है, आपके सजेशन नोट कर लिए हैं, और बाकी भी जो आपने बातें कही उन्हें नोट कर लिया है, और उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद। Thank you. Our next speaker shareholder, Mr. Bharat Raj K, who have registered as a speaker, however not joined. Moving ahead, our next speaker shareholder, Mr. Praveen Kumar, who have also registered as a speaker, however not joined. Moving ahead, our next speaker shareholder, Mr. Raju Verma, who have registered as a speaker, however not joined. Now, I invite Mr. Gagan Kumar to kindly accept the prompt on the screen, turn on your video and audio, and proceed with the question. Good morning, Mr. Chairman, Board of Directors, and fellow shareholders. Myself, Gagan Kumar. I am joining this meeting from Delhi. First of all, I would like to mention that I had requested for a hard copy of annual report, which I received well in time. And may I request our CS to kindly leave a point to be asked. There is nothing to be left to be asked pertaining to accounts, as every aspect of balance sheet is very much clear and in easy to understand language. Now, my 2 or 3 general comments or queries, you can say, sir, that using of AI in our operations in percentage. And somehow I'm not certain that this will affect us or not. In some IT companies, there will be a AI is a threat for the employees. So I would like to hear your valuable insight on this.
Now, what is our strategy to maintain or to enhance our margins? The two of my query, and what is our capex program for next 2 years? These three comments of mine. As far as the agenda of this meeting is concerned, I supported all the resolution. I'm a proud shareholder of the company since the IPO. So thank you so much for this opportunity. Hope to see a healthy growth in the business and as well as in the size of the company. Thank you. Thank you, Mr. Gagan Kumar, for compliments to the accounts of the company. So far, use of AI is concerned in NHPC. We are using AI wherever is possible in our operations, and we are working further for implementation of AI technology for implementation in and support in our operations. So far, maintaining margin is concerned, since we are regulated industry, our margin is in a certain band of, you can say, 18 to 20%. So we are maintaining that percentage, and we will maintain that percentage. Regarding capex program for next 2 years, for FY 25-26, it is in the range of 13,000 crore, and for 26-27, it is in the range of, say, 15,000 crore. So your company is in capex mode, and next 10 years your company has planned to make capex of around 1,50,000 crore. Thank you for supporting agendas and participating in the AGM. Thank you. Now I invite our next speaker shareholder, Mr. Surinder Kumar Arora, to kindly accept the prompt on the screen, turn on your audio and video, and proceed with the question. Mr. Surinder, request you to kindly unmute. नमस्कार चेयरमैन सर, मैं सुरेंद्र कुमार अरोड़ा नोएडा से मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। चेयरमैन सर, मैं आईपीओ से जुड़ा हुआ शेयर होल्डर हूँ। सर, जब आईपीओ आया था उसके बाद में कंपनी के अंदर शेयर प्राइस में वैसा ग्रोथ नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, लेकिन आज सेटिस्फैक्ट्री है। इसके अंदर प्राइस थोड़ा बेटर हो, उसके लिए सर कुछ क्या करें, मतलब हम लोगों की प्लानिंग है उसके बारे में बताएं। बाकी सर, मुझे आपकी स्पीच, आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी लगी है कि उसके अंदर सारा कुछ क्लियर हो गया सर। जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। काफी सपोर्टेड है सर, और कंपनी सेक्रेटरी ने जिस तरीके से हमें इस मीटिंग में जुड़ने के लिए सहयोग किया, जिस तरीके से सर मॉडरेटर वगैरह के जो कॉल आया सर, ये बहुत ही सर एक शुभ संकेत है कंपनी के बारे में, एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के बारे में। बाकी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। थैंक्स। थैंक यू मिस्टर अरोड़ा। अरोड़ा साहब, जहाँ तक शेयर प्राइस की बात है, शेयर प्राइस को बढ़ाना और घटाना वो कंपनी के हाथ में नहीं होती है। ये तो मार्केट जो है वो मार्केट का जो रोल रहता है, आप लोगों का रोल रहता है, बायर्स और सेलर्स का। उसमें कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है। कंपनी के हाथ में केवल अच्छी ऑपरेशंस है, अच्छे रिजल्ट देना है, और जो प्रोजेक्टों को उसको टाइम से पूरा करना, वो कंपनी उसके लिए कोशिश करती रहती है। उसके लिए मैं कंपनी के बिहाफ पे अश्योर करता हूँ आपको कि कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और कंपनी फ्यूचर में और अच्छी तरक्की करेगी, अच्छी ऑपरेशंस करेगी, और प्रोजेक्टों को कोशिश करेगी कि वो जो कमिटमेंट उस हिसाब से पूरा करे। यही मैं आपको कह सकता हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए भी और एजेंडाज को सपोर्ट करने के लिए। Thank you. Now I invite our next speaker shareholder, Mr. Rakesh Kumar, to kindly accept the prompt on the screen, turn on your video and audio, and proceed with your question. Mr. Rakesh, request you to unmute yourself and proceed with your question. Audible, sir?
हेलो हाँ, यस Yes. प्लीज, यू आर ऑडिबल। चेयरमैन सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, आप बोलिए प्लीज। चेयरमैन सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी एंड को शेयर होल्डर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया सर। सर सारे क्वेश्चन रेस हो चुके हैं, मेरा कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है क्योंकि नंबर काफ़ी लेट आया। सर आपने अपनी स्पीच में वैसे भी सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि हमारे कंपनी का भविष्य क्या है सर। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है सर कि हम डिविडेंड को कब तक और बढ़ा पाएंगे सर, क्योंकि एक हमारे डिविडेंड ये है जो इन्वेस्टर को रिटर्न देता है सर। तो आपसे उम्मीद है कि अगले साल डिविडेंड और बढ़ा के देंगे और अच्छा देंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राकेश जी। आपने जो डिविडेंड का प्रश्न किया, तो डिविडेंड की हमारी डिक्लेयर्ड पूरी अप्रूव्ड बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है, वो जो कि डीपी गाइडलाइन से अलाइंड भी है। जो उसमें हम जो हमारे नेटवर्थ का 5% और जो प्रॉफिट का 30%, जो दोनों में से ज़्यादा होता है वो देते हैं। हालांकि डीपी ने उसको जो नेटवर्थ का 5% का जो क्लॉज है उसको 4% कर दिया है, लेकिन हमने 2024-25 में उसको 5% ही मेंटेन किया है। और जब भी कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर हम जो डिविडेंड बांटने में उसको यूज़ करेंगे, कैपेक्स भी यूज़ करेंगे, कैपेक्स के बाद जो बचता है वो डिविडेंड में यूज़ करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी हमारी अब बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है उसको मेंटेन करेंगे, डीपी ने जो गाइडलाइंस दी उसको हम मेंटेन करेंगे। धन्यवाद। Thank you. Now I invite our next speaker shareholder, Mr. Manmohan Dung and Jasmeet Singh, to kindly accept the prompt on the screen, turn on your video and audio, and proceed with your question. Respected Chairman Shri Rajendra Prasad Goyal ji, Director HR Uttam Lal ji, Director Project Sanjay Kumar ji, Director Technical Suprakash ji, and all independent directors, KMPs, and co-fellow shareholders. We are attending this call from Delhi. Sir, another year of growth, and we are delighted with this continued performance of our company during last several years. And the way you have already presented your opening note, it is reassuring that we will continue to grow from here on. देखिए आपने जो है ये इतने सारे स्पीकर जो पहले बोले, काफी सारे क्वेश्चन तो निकल ही गए। कुछ दो तीन मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं और उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं विच आई वुड लाइक टू आस्क दी दिस बोर्ड टुडे। पहला है सर कि जो रियलाइजेशन हमारी जो होती है आगे डिस्कॉम से, तो वो अभी पर यूनिट हमारी क्या चल रही है, और इसमें जो है अगर इसको हमने बढ़ाना हो तो ये इसको कैसे हम मतलब इसको हम बढ़ाने के उसमें होते हैं। क्या ये मतलब हमारे कुछ ईयर्स के लिए उनके साथ एक प्राइस का जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, या मतलब हम इसको इंटरिम भी कभी हम जो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और जो ईयर अंडर रिव्यू है जो आज हम ये बैठक हमारी हो रही है, क्या उसमें हमारे को बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ? ये एक मैं थोड़ा सा आपसे मैं जानकारी मैं चाहूँगा, अगर ये आप जानकारी दे पाएँ। इसके अलावा जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, देखिए हमारी पीएसयू है कंपनी, और इसमें जो है वो मैं समझ सकता हूँ कि जो पद रिक्त हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयज अटेनिंग द से जो उनकी रिटायरमेंट एज जब आ जाती है, तो फिर वो जो है वो रिक्त पद की जो नियुक्ति जो है वो क्या वो समय से हो रही है? क्या अभी कोई डेफिसिट तो नहीं है ह्यूमन कैपिटल में? ये एक दूसरा मैं चाहूँगा कि अगर इसके बारे में थोड़ा बताया जाए। बाकी मैं चाहूँगा कि मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ मैडम रूपा देव की, जिन्होंने जो है वो आज हमारे को अवसर प्रदान किया और आपसे हम इंटरेक्ट होने का अवसर हमारे को प्राप्त हुआ। मेरी इसमें थोड़ी सी एक टिप्पणी है और वो आप शायद उसको बहुत अच्छी तरह से लेंगे
कि जो हमारी कंपनी जो है वो पिछले साल जैसे मुझे आपने अवसर प्रदान किया था और मैंने आपसे ये 1 टू 1 इंटरैक्टिव जो था वो मैंने आग्रह किया था और आपने उसको बखूबी जो है वो आपने उसको आज इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। साथ के साथ आप जो है वो जवाब उत्तर दे रहे हैं और हमारे को जो है अगर कोई हमारी उसमें कोई मतलब कोई क्लैरिटी अगर हमारे को चाहिए तो वी आर एबल टू आस्क यू देयर एंड देन। तो ये बहुत अच्छी है। इसमें एक ये था कि स्पीकर नंबर्स भी जो है ना मॉडरेटर वो अगर अनाउंस करें साथ में, जो कि एक आजकल मैच्योर्ड वो एनवायरनमेंट बन गया है ये वीसी कंडक्ट करने के लिए। हालाँकि ये भी मैं महसूस करता हूँ कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसमें वो ये है कि मीटिंग्स जो हैं वो वीसी पे की जा सकती हैं, ना कि ना उनकी उनकी जो गाइडलाइंस है वो है कि आप कर सकते हैं, ना कि उनकी तरफ से एनफोर्समेंट है कि आपको वीसी पे ही करनी है। तो ये थोड़ा-सा जो है ना ये छोटी देखिए हम वी आर ए सच अ लार्ज ऑर्गनाइजेशन हैविंग टर्नओवर ऑफ से 10,000 करोड़, प्रॉफिट्स ऑफ से इन एक्सेस ऑफ 3,000 करोड़। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आप एक हाइब्रिड मीटिंग कीजिए। मेरे को अवसर प्राप्त हुआ, पीछे बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ उन्होंने कंडक्ट की, पुणे में उनके सारे ऑफिसेज़ हैं और उन्होंने अपने होटल्स में उन्होंने मीटिंग की। एक हिटाची एनर्जी कंपनी है, हमारी मतलब पावर सेक्टर में है, उन्होंने बैंगलोर में की और मेरे को उनमें भी ये अवसर प्राप्त हुआ, दिल्ली में बैठ के उनमें मैंने इंटरैक्ट किया। मैं वो चीज़ मैं यहाँ पे चाहता हूँ। हमारे फरीदाबाद में अगर आप मीटिंग करेंगे, प्रोबेबली वी विल सी इफ इट अलाउज़ अस टू गेट से फिज़िकली और आपसे मिलने का भी जो अवसर प्रदान हो, तो ये आप इसको ज़रूर कीजिए मतलब जो है ना इससे एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि जो है ना इन्वेस्टर्स के साथ आप जो है मतलब यू आर प्रो इन्वेस्टर, आप जो है उनके साथ आप मिलना चाहते हैं। बाकी मैं शब्द नहीं है। देखिए आज आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। ये धन्यवाद का भी लौटाना होता है। वो अब आपने कैसे करना है वो आप पर है। अगर आप वो लौटाएँगे तो ब्लेसिंग्स ही आपको और मिलेंगी और बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं यहाँ पर अपना विराम लगाता हूँ और आपसे आग्रह करूँगा कि जो हमारी कुछ जो मैंने रिक्वेस्ट की हैं उनकी आपको अनुभूति हो और आप उनका जो है वो यथायोग्य आप उनको जो है एड्रेस करवाएँ। और रूपा मैडम आपसे बहुत हमारे को एक्सपेक्टेशन है टू सॉलिडिफाई आवर इन्वेस्टर रिलेशंस एंड looking forward to connect with some of your teammates. प्रीवियस स्पीकर ही सेड दैट उनको फ़ोन भी आए, मैं भी चाहता था मुझे फ़ोन आए लेकिन मेरे को नहीं आया। हो सकता है कि मेरा फ़ोन ना मिला हो, मैं वो भी एक वो है, बट प्लीज़ थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन सर। थैंक यू। थैंक यू। आपने जो रिलेशन की बात की डिस्कॉम से, तो ये पर यूनिट जो किलोवाट का यूनिट होता है हमारा 3 रुपये बेस पे से हमारा रिलेशन है। और जहाँ तक इसको बढ़ाने और घटाने की बात है तो वो हमारे उसमें नहीं है। हम रेगुलेटेड इंडस्ट्री हैं, हर एक पावर स्टेशन की जो टैरिफ है वो हमारा जो रेगुलेटर है CERC वो फिक्स करता है हर साल के लिए। तो ये बीइंग रेगुलेटर इनकम को बढ़ाना, रिलाइजेशन को बढ़ाना, ये सब हमारे कंट्रोल में ही है, क्योंकि हमारे तो लॉन्ग टर्म PPA हैं और जो CRC जो फिक्स करता है उस हिसाब से हमें टैरिफ मिलता है। जहाँ तक आपने ह्यूमन कैपिटल की बात की, वैकेंसी भरने की, बिल्कुल ह्यूमन कैपिटल को हम बहुत तवज्जो देते हैं और जितनी वैकेंसी होती है हर साल दर साल हमारे मैन पावर प्लान के हिसाब से हम उसकी एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, भर्ती करते हैं। लेकिन चूँकि हमारे प्रोजेक्ट थोड़े दूर दराज में है तो लोग जो हमारे एम्प्लॉयज आते हैं वो थोड़ा छोड़ जाते हैं, तो वैकेंसी फ्री क्रिएट हो जाती है और जो सुपरविजन से भी वैकेंसी क्रिएट होती है तो उसको हम हर साल भर रहे हैं। और बाकी आपकी जो और भी जो सजेशन है उस पर हम काम करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मीटिंग ज्वाइन की और हमारे एजेंडा को सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. And that was the last speaker shareholder for today. Now, I would like to hand over the proceedings to Chairman Sir for closing remarks. Thank you everyone. The resolution as set forth in the notice shall be deemed to be passed today, subject to receipt of requisite number of votes by members. With this, the 49th annual general meeting comes to an end.
The voting shall remain open for next 15 minutes. Any member who would like to vote may do so within this period. Thank you for attending the meeting. I hereby declare the meeting as closed. Thank you. Advancing with purpose relentlessly.